मुझे मैं तैयारी क्या करूं, इस कैसे प्ले करूं, मुझे कुछ तो बताओ मैं क्या करूं. एंड ही जस्ट गेव मी वन ब्रीफ थ्रू आउट द शूट. ही सेड विकी मुझे शेर चाहिए. वो चले तो शेर, वो दहाड़े तो शेर, वो लड़े तो शेर, वो चुप तो शेर, वो नाचे तो शेर. वो शेर है. एंड दैट्स ऑल ही सेड टू मी. Vicky, this is your second collaboration with my dog films and Lakshman, sir. How did it feel to bring this character to life? What was this personally and professionally mean to you? What changed? जब हम तैयारी शुरू कर रहे थे छावा की, मैं लक्ष्मण सर से रोज मिलता था. हम स्क्रिप्ट पे बैठते थे, हिस्ट्री पे बैठते थे, सारी रिसर्च करते थे. मेरे पास बहुत सवाल होते थे कि अच्छा फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था. बट इवेंचुअली आफ्टर नोइंग ऑल द हिस्ट्री, आफ्टर नोइंग ऑल द रिसर्च, मैंने सर से ये पूछा था कि सर मैं तैयारी क्या करूं, इस कैसे प्ले करूं, मुझे कुछ तो बताओ मैं क्या करूं. एंड ही जस्ट गेव मी वन ब्रीफ थ्रू आउट द शूट. ही सेड विकी मुझे शेर चाहिए. एंड दैट्स ऑल ही सेड. वो चले तो शेर, वो दहाड़े तो शेर, वो लड़े तो शेर, वो चुप तो शेर, वो नाचे तो शेर. वो शेर है. एंड दैट्स ऑल ही सेड टू मी कि और कुछ मत सोचना. In every cell of your body you should feel like a lion. And I really hope and pray that जब लोग 14 फरवरी को फिल्म देखें, they feel that. Lovely. At least we feel for now. Thank you. Hello guys, I love the trailer. बहुत ही authentic है. There are two questions. My first question is for Dinesh sir. Trailer grand है, larger than life है, but वो कौन से focus key points है जिस पे आपने ध्यान दिया to make it authentic in terms of history? And my second question is to Vicky. जब भी I see your movies and I see your trailers, I see that a star is born each day, every time. मेरा आपसे सवाल है कि you told the brief Lakshman sir gave to you, but what did you do to make the character your own? And the last scene, the scene with the lion, उसके बारे में कुछ बताइएगा, if you can. I think हमारा सबका काम as actors बहुत आसान इसलिए हो गया था. I remember every time मुझे confidence चाहिए होता था, I used to look at Lakshman sir. Because Lakshman sir ने मुझे एक बात बोली थी कि Vicky, this film is personal for me. And when a director says that, you get so much confidence because you know that जो भी इस फिल्म में होगा, जैसे भी शूट होगा, जो scenes लिखे जाएंगे, it's going to be sincere, earnest, and it's going to be authentic. तो मेरी तरफ से, of course, there was a lot of action training. In terms of physicality of the character, everything went in. इससे पहले मैंने सैम बहादुर खत्म की थी and then I took a 7-month break to prep for this film, to gain some weight, beard, hair, everything, action training, sword fighting, horse riding, everything. But important thing was to get the spirit of Chhatrapati Sambhaji Maharaj, and उसके लिए I would just keep looking to Lakshman sir. एक और चीज़ बहुत help करती थी कि Lakshman sir, since the day that we have started discussing Chhaava, he's called me, he's only said Raze to me. He's never called me by my name. Phone पे हो या in person हो या shoot हो, वो आज तक वो मुझे राजे ही बुलाते हैं. And I don't know, वो एक जब आपके director आप में इतना confidence फूंक देते हैं ना, वो आप खुद वैसे देखने लग जाते हो खुद को. And I only have Lakshman sir to thank for that. That he made me really he held my hand and took me into that world. The lion sequence, देखिए जब भी आप छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में गूगल करेंगे, जिनको नहीं पता होगा, तो एक इमेज जो पहली आती है वो ये आती है कि वो शेर का मुंह फाड़ने की एक इमेज आती है. तो ये उनकी एक गाथा है. So obviously we had to pay respect to that moment, that scene, and that is what is displayed in the film. How it comes, where it comes, and how it's executed, we'll leave it for the people to experience that in the theaters. But it was for me, it's something I've never done before. So it was a great experience, and I was at the able hands of Lakshman sir and all the technicians.